So hello everyone, welcome back to today's video. So today we have Suparn with us. Suparn is a Mahatma Gandhi National Fellow and a very good friend of mine from our college days. So in this video, Suparn will be sharing his entire journey of becoming a Mahatma Gandhi National Fellow, and will be sharing his entire process, how he applied and how was his experience working into the social space. You can always refer to the questions asked in this conversation in the description box of this particular video, where I've mentioned the timestamp. If you like this particular video, please smash the like button and hit subscribe, and let's start with the conversation. So we have with us Suparn with us. So Suparn, can you tell a bit about yourself and your background to our audience so that they can know a bit about you? Yeah, thank you, Asutosh, and hello to everyone and all my friends. Myself and Asutosh, we both are from the same batch. We did BTech from National Institute of Foundry and Forge Technology and in the metallurgy stream. So how did you get into this social space? So did you had some background, or what was this unique thing about this MGNF Fellowship? I think we passed out BTech in the year 2020, and our final results got a bit delayed due to COVID, and the results were declared in the month of October. Actually, I also got a placement offer, but due to the COVID situation and since the company was too far from my home, मैंने decide किया कि I will not join the company. So after that, basically, I was preparing for CAT, and I even got a good percentile, but could not fetch me a very good college, the top IIMs. So I again decided to prepare once again. So in the year 2021. Meanwhile, I was preparing. I came to know about this notification, and this I got from the official website of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and IIM Bangalore, and they mentioned about the fellowship. So this fellowship was offering a good stipend, and since it was related to my work, which I also done in the past in my college days, so I came to know about this fellowship from there only, and I went to the past papers, which unfortunately I could not find much over the internet, because this is a very, very new fellowship course organized by Ministry of Skill Development. I got the notification from the site of IIM Bangalore. सुपर्ण इस तरह के कई सारे फेलोशिप्स हैं अवेलेबल, कई डिफरेंट वेबसाइट्स पे हम लोगों ने देखा है, पर एमजीएनएफ फेलोशिप को ये क्या चीज, एक पर्टिकुलर चीज है जो इसे यूनिक बनाता है और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को इसे परस्यू करना चाहिए? लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है एमजीएनएफ फेलोशिप में, ये है कि इसका जो कनेक्टिविटी है, इन द सेंस कि काफी ब्रॉड है, वास्ट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फेलोशिप है, लास्ट टाइम जो ये फेलोशिप का इन्होंने रिक्रूटमेंट लिया था, दैट वाज इन अ पायलट फेज, कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल फेज में था, एंड आई थिंक अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स वर कवर्ड दैट टाइम, सो लास्ट टाइम इन 2019. And since the program was very much successful, so that the Ministry of Skill Development decided to go with full force this time, and they wanted to recruit in all the districts of India. So this time over 660 posts were released for the MGNF Fellowship, and last time 75. So in total also around 730 to 740 districts are present in India throughout all the states. So this time they released the notification for 660 seats. So this is one thing which I will mention, that the connectivity factor is there. Other thing is that it is very vast. For example, if you are present in your district, so it is not other fellowships. I will not take name, but some of the fellowships, for example, they cover only one sector, such as health sector. Okay, some will cover on one sector, another sector, but this fellowship, because it is related to skill development, so skill development is such a topic that skill development can be done in any industries, any trades. For example, skill development can be related to sports, health, education, training, vocational training, anything. So the sphere is very, very vast in MGNF. Oh, great. So yeah, that was kind of good amount of data or insights. और definitely वो stipend 60,000 की stipend जो per month मिलती है, वो भी kind of एक actually yeah.
बहुत ही बढ़िया that फीचर is है। also a big attraction. Yes, that is also a big attraction for nowadays. And one thing is that they do provide a good stipend. Along with that, they provide some other allowances such as laptop allowance हो गया, आपका internet allowance हो गया, and during the days that you stay during the training days, they also give a good amount of DA, that is dearness allowance. And so these are other perks which you get along with the stipend. So yeah, this is also a big attraction. Not ग्रेट। सो सुपन, लेट्स क्विकली मूव टू दी कि इस MGNF फेलोशिप को अगर हम लोग सेलेक्ट होना है तो क्या एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, या फिर कैन यू जस्ट शेयर अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द एंटायर प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस से लेके फ्रॉम गेटिंग इनटू द फेलोशिप, और या फिर जस्ट ब्रीफ इनसाइट। तो सबसे पहले तो ये है आशुतोष की दिस अनलाइक अदर एग्जाम्स, MGNF एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको पता नहीं है, यू आर नॉट अवेयर मच अबाउट द सिलेबस एंड ऑल, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल फेज में थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले एक बार ही कंडक्ट हुआ है। तो बेसिकली मैं ये बता दूं कि द सिलेबस व्हिच दे गिव इज, बिकॉज आई एम बैंगलोर सेट द क्वेश्चन दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आल्सो द एग्जाम इज कंडक्टेड, सम आई एम विल ओनली सेट द पेपर. So syllabus is related much like the CAT syllabus. I would say it in the syllabus wise, but in the broad sense I would say like that. But the level of questions is very low as compared to CAT. But they have quant, they have reasoning, and they have English, and one more section is added, that is GK. So last time when they conducted, they kept around 30 from quant, English, and reasoning, and 10 questions from GK. But this time they divided it equally, and there were 25 questions from each section. So yeah, this is the syllabus. And preparation, I would not suggest anything as such, studying or solving any books. You just need to be good at your basics should be strong in quants and in reasoning, and you should have a habit of reading some books in English, maybe novels, some articles, some essays time to time. That will give you a good grasp in VRC section, that is English verbal ability. And for GK also, you need not go deep. They only ask from the trending topics. Maybe you can cover last 4 to 5 months and need not go deep into the topic, because the questions are not tough, they are very easy. So मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, मतलब डू वी नीड टू हैव या ग्रेजुएशन चाहिए या रिगार्डिंग दैट, एलिजिबिलिटी में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज है 21 to 30 years. This is one thing. And next thing is that in the website they have mentioned that they freshers are allowed, no doubt, but they will prefer people with more than two years of work ex, that too in the social or developmental sector. So of course freshers are also allowed. I am also a fresher, but you can hide these things in any exams. For example, what I did is that, since as I said you that I have been situated with this background in my college days also. In our college there was a NGO named Kartavya, which used to taught the poor people in our locality, in near our college, the slum people, and we did not charge any fees. We collected through maybe selling of t-shirts and hoodies and all those things, and we also paid the fees for the students. So during the interview I took advantage of this thing, because I was also the center in charge during my college days of the Kartavya NGO, and I explained them these are the problems we faced, and this is how I carried out 2 to 3 years, from my second year till my fourth year I carried out teaching in Kartavya and organizing funds for the students. So yeah, they felt that this is genuine and this could be considered as a good work ex. So yeah, like this you can it's not always compulsory that they have mentioned work ex that you need a concrete work ex. It's not like that. You can even hide these things because everybody, in colleges you have so many clubs and so many things going out there, and almost all the colleges do have an NGO of themselves, or the students organize that. So these things you can be street smart and you can hide these things. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होती है, पर आपने एक एनजीओ की एक्सपीरियंस आप लोग को मिल चुकी है कॉलेज के दौरान, जो कि काफी हेल्प किया इन गेटिंग थ्रू द फेलोशिप. सो दैट वाज द आइस ब्रेकिंग. नो बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वर्क एक्स चाहिए. दे हैव मेंशन्ड दैट फ्रेशर्स आर आल्सो अलाउड, बट दे विल प्रेफर द वन हु इज कमिंग विद अ वर्क एक्स. दैट इज द क्राइटेरिया. ओके, ग्रेट.
सो आपने लेट्स से फेलोशिप क्लियर कर लिया है, आपको आपका ऑफर लेटर मिल चुका है. सो कैन यू जस्ट ब्रीफ अबाउट दी फर्स्ट 10 days 15 days कि आपका वो जर्नी कैसा दिखता है, एक स्टूडेंट जो परस्यू करना चाहता है ये फेलोशिप की फर्स्ट 15 days Yeah. आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है? कैन यू जस्ट शेयर अबाउट? So the fellowship is broadly divided into two phases. First is the academic module, and the next is the district immersion. So in the academic module, first of all, you go for a 2-week training period, and then you will go for 4 months in your allotted district, and again you have to come back for 2 weeks for sort of a training session in the academic module, and then again you get deployed for 4 months in your district. So since I am selected for Jharkhand state, so I am Rachi is handling our training sessions. So the training sessions was organized for the first 2 weeks of the fellowship at IIM Rachi, and it was very, very good, and a very good experience for all of us, because all the 24 fellows we interacted, and IIM Rachi was also handling the fellows of Tamil Nadu. So 24 plus 38, almost 62 fellows. It was a very good interaction, and they also they formed groups, they gave us group activities mostly, and they taught some subjects. Subjects means there was a pool of professors of IIM Rachi, and they taught us the basics of some subjects, because when we go to the district, we have to face so many things at the ground level. So they taught us some basics of account and financing, some basics of research methodology, some basics of operations and management. And after that, even the director of IIM Rachi, sir, also took a few sessions. And one of a very good and insightful session was taken from the Divisional Commissioner of Jharkhand. So sir took 2 sessions, took out some time from his schedule and took 2 sessions. And he basically told us that although you are going, you are excited, but he made us aware of the ground realities in the district, because in the district administration, although you come from any background, but you have to follow the rules and regulations. So sir made us aware of all those things, and he told us to go a bit slowly and do not directly go into district and jump into things that I will do this, I will do that. First he told us to give 1 month and understand the scenario assessment of the district, and then carry forward. So yeah, it was IIM Rachi days. We enjoyed a lot, and even during Diwali, we decided to stay at IIM Rachi and had a very good celebration at IIM Rachi. So yeah, it was fun. Really great experience. So great. Having the knowledge about all this finance, economics. So basically, you got all these kind of knowledge from a basic level, and then you might be using that in your fellowship, which is going right. Yeah, absolutely. Because look, even in a district, we were also a bit confused that why are they teaching us this finance, accounts, operations, research methodology, and all those things. But when you will go to your district, anytime, because we are in constant touch with our district collectorates, that is the DC of each district. So if they tell you that okay, Suparn or anybody, this fellow, I have one work, I want to organize a skill survey of the unemployed youth, then you have to prepare a proper questionnaire. For that, you need to be strong in the research methodology concepts. These were taught to us already in IIM Rachi, so that made our work easier. Even if some training partner came to us, okay, and they showed us that this is our turnover, this many students we are teaching, and this is how we will proceed further. So if they are coming with something, it may be a balance sheet, maybe account statement, I need to have some knowledge to grasp that. So these were the things which were taught to us, and they are really beneficial during the district immersion days. Great. So yeah, that was kind of quite knowledgeable. So Suparn, basically क्या हम ये बोल सकते हैं कि like what is the selection ratio, मतलब कितने applicants apply कर रहे हैं इस fellowship के लिए और कितने select हो पा रहे हैं? So can you just give a picture on that? Yeah. Actually, Asutosh, they did not mention the exact figures, but I know about the interview. In interview, basically, since in Jharkhand there are 24 districts, and so for 24 seats were there in Jharkhand, so approx 100 students gave the interview. So yeah, in interview you can say it is out of 4, every 1 student got selected. That is, you can say 3:1 ratio. But how many gave the exam during the initial days, during the prelims days, that was not mentioned officially. Yeah, unofficially they did mention, but I don't think that that was correct. So yeah.
Okay, that is quite hard. 3:1 का ratio. So let's move on. So Supan, हम्म, हम लोग we are from the metallurgy and materials engineering background. So आपको काफी सारा challenges face करना होता होगा in the initial days, the first month or the second month, because plus it is a government organization, plus you are attached with a brand name. I am this program is run या by Bangalore. So काफी सारे challenges आपको face करने हो सकते हैं. Plus you are a fresher, you don't have much experience into the social space. So can you just elaborate on the challenges you would have faced in the initial days, और आपने उसको कैसे tackle किया था, या फिर just you can share your experience on that part also. या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा होता है कि व्हेन यू मूव टू अ डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे आर फंक्शनिंग एट देयर ओन पेस, एंड आपको ये चीज जानना हो कि आप एक एक्सटर्नल हो वहाँ पे, यू आर नॉट रिक्रूटेड एज एन ऑफिसर और एज एन एनी अदर मे बी of that particular department. So for example, we were told to visit our mentors at the district skill office or district labor office or maybe the district collectorates. तो सबसे पहला प्रॉब्लम आप ये फेस करोगे कि each and everyone will ask कि आप कौन हो, आप कौन से ऑफिसर हो, like that in the district. So you have no answer to that. When you tell them that yeah, I am a fellow, what happens that in our system, our setup, nobody understands ये fellow क्या होता है. So ये सब चीज है, ये सब प्रॉब्लम को फेस करना है during the first month. Yeah, of course, after 2 to 3 weeks you will settle down. Your district scale officer, your district collector, they will be completely aware. But जो subordinate उनके जो staff है वो हमेशा ही परेशान रहेंगे, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलने में ही फायदा है, मैं तो यही कहूँगा. और जो आपको काम दिया गया, आपको वीकली टास्क असाइन होंगे, आपको मंथली टास्क असाइन होंगे, उस पर ज्यादा ध्यान दे. एंड या धीरे धीरे मतलब सॉर्ट हो जाता है. यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन देम. Yeah, so these are the few problems which you will face. और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को डिप्लॉय किया जाएगा, तो वहाँ के जो डीसी सर हैं या फिर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर्स हैं, वो मतलब काफ़ी कोऑर्डिनेटिव है और वो लोग आपके लिए अच्छा वर्क प्लेस प्रोवाइड कराएंगे. और फॉर योर अकोमोडेशन ऑल्सो दे विल अरेंज इन द इनिशियल few days, and you can also stay in the district collectorate office, or they do also have the circuit house for the first few days, maybe one week, and after that you have to look out for yourselves. बहुत बढ़िया. तो बेसिकली मैं जो अगला सवाल पूछना चाह रहा था, एक स्टूडेंट जो पब्लिक पॉलिसी या फिर स्किल डेवलपमेंट या फिर एक पर्टिकुलर एनजीओ स्टार्टअप में काम करना चाह रहे हैं, सो उनके पर्सपेक्टिव से ये फेलोशिप किस तरह से यूजफुल या हेल्पफुल हो सकती है उनके कैरियर ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से. सो वी जस्ट आल्सो शेयर ऑन दैट. सो पहला बात तो ये है कि इस फेलोशिप का एक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस जो मैं बोलूँगा वो ये है कि सिंस यू हैव टू वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट, यू हैव टू वर्क विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल जो रूट लेवल पे, आई मीन ब्लॉक, विलेज, पंचायत लेवल पे किस तरह से काम होता है. ये आप पूरी तरह से अवेयर हो जाओगे. एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, आजीविका सखी मंडल है, ये सब जो चीजें होती हैं, फिर आपका आंगनबाड़ी वाला जो चीज है, जितने भी चीज है, मतलब कि ग्राउंड मतलब रूट लेवल पे कैसे काम होता है, या फिर जो गवर्नेंस है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे अपना प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, बीडीओस हैं, एसडीओस हैं, तो आपको सभी से इंटरेक्शन होगा. ठीक है, तो आपको ये चीज सबसे पहले आइडिया लग जाएगा कि रूट लेवल पे काम कैसे होता है. आपको ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करने का बेनिफिट वो अलग. ठीक है, और दूसरा है कि इसके साथ साथ आप जो आईआईएम में सीख रहे हैं, क्योंकि दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग अस अ गुड अमाउंट ऑफ स्टफ, तो उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, ये आप सीखोगे. और दूसरा बात मैं बोलूंगा कि जो एस्पिरेंट्स है, क्योंकि सिंस दिस इज अ 2 year फेलोशिप, तो पैरेलली आपको अपने करियर प्रोग्रेशन पे भी ध्यान देना है. तो फॉर एग्जांपल आफ्टर 2 years अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, मे बी एनी डेवलपमेंट सेक्टर, एनी सोशल सेक्टर, या फिर कंपनीज की जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां पर आपको जॉब मिल सकते हैं. बिग एनजीओ से वहां पर आपको जॉब मिल सकते हैं. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट ये इसलिए क्योंकि स्टिल इट इज इन द एक्सपेरिमेंटल फेज. जो लास्ट बैच है, I think they have completed 23 months of their fellowship. 1 month more is left, and so they are still not pass out. So we know that these many opportunities, these many gates will open
बट जैसे होता है ना, कोई भी कॉलेज कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो अभी तक उसका प्रॉब्लम फुल होती एंड है। प्रूफ कुछ है नहीं कि हाँ चलिए इन लोग यहाँ प्लेस्ड हुए या सो दैट इज वन थिंग फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, बिकॉज आप डायरेक्टली ग्राउंड रियलिटीज जान रहे हैं, कैसे काम होता है ये सब जान रहे हैं, तो वहाँ इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो ये सब चीज आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाता, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि हाँ सर ऐसे काम होता था, ये हमारे नोडल ऑफिसर थे, इनके थ्रू प्रोजेक्ट पास होते थे, ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट होता था, कौन कोऑर्डिनेट कराते थे, ये सब आपको पूरा मतलब नॉलेज मिल जाएगा 2 इयर्स में, बिल्कुल फर्म नॉलेज आपको आपके पास होगा। तो वो पॉइंट काफी ज्यादा मजेदार था कि ये फेलोशिप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी हेल्प कर सकता है, तो उसी पे मैं हाँ आना ऑफ चाहूंगा। कोर्स। और ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, हमारा जो पिछला क्वेश्चन वो था कि पर्टिकुलर कैरियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये फेलोशिप कैसे हेल्प कर सकती है। पर लेट्स से आपका एक टिपिकल डे है, एक पर्टिकुलर डे, तो एक पर्टिकुलर डे ऑफ एमजीएनएफ फेलो हम्म कैसा दिखता है या फिर कैसा लगता है? क्या आपको प्रिपरेशन हम्म करने का समय मिल सकता है इफ यू आर थिंकिंग टू डू समथिंग एल्स? सो कैन यू जस्ट शेयर अ ब्रीफ ऑन द टिपिकल डे व्हिच लुक या फॉर यू एट एमजीएनएफ? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका शेड्यूल है पूरे डे का, वो आपको फॉलो करना है कि जिस ऑफिस में आपको वर्क स्पेस प्रोवाइड कराया गया, इट मे बी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट ऑफिस, इट मे बी द डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिस, इट मे बी द डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इट मे ऑल्सो बी द डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस। तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो पर्टिकुलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिस मिलता है तो वहाँ पर ऑफिसर रहेंगे डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर। ठीक है, तो वो ऑफिस का जो टाइमलाइन है वो आपको फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इट इज फ्रॉम 11 to 6। ठीक है, तो वो आपको फॉलो करना। दूसरा जो हॉलीडेज का बात है, तो जिस स्टेट में आप पोस्टेड हो तो उस स्टेट गवर्नमेंट की जो हॉलीडेज है वो आपको फॉलो करना। बट या आपको एक चीज और है कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का सेंट्रल लेवल पे है, तो वहां से आपको कभी भी मतलब यू हैव टू बी रेडी, कभी भी वीडियो कॉल, कभी भी कॉन्फ्रेंस हो सकता है, कभी भी मीटिंग्स हो सकती है, इवन ऑन संडेज या, क्योंकि देखिए फेलोशिप है तो थोड़ा इसमें तो रिगरस वर्क रहता है, क्योंकि एज अ यस। आई थिंक वी आर काइंड ऑफ अ रिसर्च फेलोज। हमें स्किल गैप एनालिसिस करना है, हमें डिमांड एग्रीगेशन ग्राफ बनाना है कि कितना गैप है, क्या है, कैसे उसे ब्रिज कर सकते हैं। और आपके जो देखिए ऑफिसर है वो भी काफी सपोर्टिव रहते हैं, जैसे इन माय केस जो मेरे डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर है और मुझे डीसी सर है वो काफी सपोर्टिव है, तो दे विल ऐड यू इन सम ग्रुप्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट ग्रुप्स। सो इस टाइप का है, बट अभी तो मैं भी काफी न्यू हूँ, तो या So can you see some change in yourself with respect to your personality or the skill set? आपके पास जो गेन हुआ है पिछले 4-5 महीने में, उस लहजे से या फिर उस हिसाब से आप में क्या एक बदलाव आया है आफ्टर यू परसुइंग द एमजीएनएफ फेलो? कैन यू जस्ट या सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक फ्रेशर था, तो सबसे पहला जो चेंज मेरे में आया वो तो शेड्यूल। इससे पहले क्या था कि मतलब कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं था, फ्रेशर थे, तो जॉब का एक्सपीरियंस आई डिड नॉट हैड एनी प्रायर जॉब एक्सपीरियंस। तो the biggest change which has been brought is my schedule. I have to wake up early in the morning and regularly go to office and all those things. Next thing मैं ये बोलूँगा कि एक sense of responsibility आया, क्योंकि you have to see one thing is there that in the whole district आप अकेले हो MGNF fellow. या There is nobody means so for example in any district maybe 10 to 15 blocks are there on an average I am telling. या So that all the blocks, मतलब आपके पास सारा का नॉलेज होना चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है क्या नहीं है, क्या पॉपुलेशन है, क्या वर्किंग पॉपुलेशन है, क्या यूथ पॉपुलेशन है, कितना मतलब वर्किंग है उसमें। ठीक है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, क्या इंडस्ट्रीज है, क्या सेटअप है, कहाँ पे स्किलिंग को और बढ़ाया जा सकता है, और कौन सा इंडस्ट्री सब सेटअप कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का लोकल सिनेरियो देख के। तो बेसिकली है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, और आपको अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया उसके बारे में आपको फुल्ली अवेयर होना है कि क्या है, कितने ब्लॉक्स है, कितने विलेज है, कितने पंचायत है, मतलब ग्राउंड लेवल के रियलिटी से आपको अवेयर होना है। तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ती है, और तो उसके साथ मजा भी आता है काम करने में। ग्रेट। सो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो है, सो हम लोगों ने पूरा जर्नी आपका डिस्कस किया फ्रॉम द प्रिपरेशन टू गेटिंग इनटू द एमजीएनएफ फेलोशिप। सो what after this? I mean, after 2 साल के बाद क्या? So what are you looking to make your career in, or a student who is pursuing this MGNF fellow, or a person who is thinking to get into this MGNF fellow? So 2 साल अगर आप ये फेलोशिप परस्यू करते हो तो आपके
आपकी कितनी सारी जगहों में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर आप कौन कौन से डोमेन्स एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्टिव? सो कैन यू जस्ट शेयर सम या या career routes or तो path which a fellow can pursue? तो बेसिकली तो ये 2 साल का आपका जो है फेलोशिप कोर्स है, and उसके बाद a very wide range of opportunities open for you. First of all, after 2 years, you will get a certificate of public policy and management from IIM, whichever IIM you are assigned, and along with the Ministry of Skill, organized by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So this will carry a good amount of value going forward in your career. फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा चीज जो आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर कंपनी से, सोशल सेक्टर जो कंपनी से जो सोशल वर्क करती हैं, उनमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज और है कि जितने भी कंपनीज हैं, जो बिग कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर काफी करोड़ में होता है, सो दे गो फॉर अ CSR नेम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका भी एक टीम होता है, एंड दे फाइंड सच पीपल जो कि इस टाइप के बैकग्राउंड से हैं, जो कि मतलब रूट लेवल या ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, हु कैन प्रोवाइड गुड आइडियाज कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, दिस इज अ गुड सोशल थिंग व्हिच वी कैन इन्वेस्ट इन। तो वहां पर आप रिक्रूट हो सकते हैं। यू कैन आल्सो जॉइन बिग एनजीओस एंड बिग फर्म्स लाइक दिस। एंड जो मैंने आपको पहले भी बोला कि काफी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो कि मैं देख रहा हूँ इस बैच में काफी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है। पैरेलली दे आर कवरिंग दिस फेलोशिप एंड आल्सो स्टडीइंग in their free time, and because ये फेलोशिप के बाद आपका जब यूपीएससी, if in case you clear the UPSC prelims and mains, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है, not only UPSC, the other state PCS exams also. So yeah, these are the opportunities, and क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो लास्ट वाले जो फेलोस है, as I told you earlier also, उनका 23 months हुआ, तो 1 month is left, and after that और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी इस चीज पे। Able to pursue this particular course. So IIM Bangalore is the head of all this fellowship, if I'm correct. So उनके द्वारा ये सारा कुछ चैनलाइज हो रहा है, so you can see and you can definitely bet on this thing, और ये जरूर एक करियर पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। So thank you सुपर्ण, अपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और you just enlightened our audience with the MGNF Fellowship और पूरा क्राइटेरिया। जस्ट एक मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि as this in the fellowship was requiring some work experience, ऐसा कुछ, पर सुपर्ण के पास एक एनजीओ का एक्सपीरियंस था, that kind of experience part and help Suparn to get into this fellowship, and also the key points where ये अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, अगर आप एक पब्लिक पॉलिसी के एस्पिरेंट हो, अगर आप एक एनजीओ स्टार्टअप में काम करना चाह रहे हो, या फिर आप अपना ही एक एनजीओ परस्यू करना चाह रहे हो, so definitely MGNF is the thing which is made for you to pursue, and the best part is the stipend which it provides. So definitely these are some of the hot and the key points of the MGNF Fellowship. So thanks a lot Suparn again, and मिलते हैं नए वीडियो में। Yeah, thanks Asutosh, and I also enjoyed a lot making the video with you. Thanks. Thank you. Bye.